Hello friends, केमिति अछंती? I hope you all are doing great. Mo Madan welcome you all to my today's English class. आजी आमे future perfect continuous बा future perfect progressive रो affirmative sentence माने सकारात्मक वाक्य, negative sentence माने नकारात्मक वाक्य, interrogative sentence माने प्रश्नवाचक वाक्य, नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस माने नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य विषय रे जानिबा। केमिति चिन्हिबे? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस को चिन्हिबा पई मु आपण माननकु दुईटी उपाय कहिबी। प्रथम रे जदि वाक्यर शेष रे ई आसुथिबो, ई आसुथिबा, ई आसुथिबी, ई आसुथिबो एवं ई आसुथिबे थाए तेबे ताहा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस बा धारावाहिक भविष्यत समय अटे। उदाहरण मु जाई आसुथिबी, आंभे माने जाई आसुथिबु इत्यादि। द्वितीय रे जदि फ्यूचर कंटीन्यूअस रो वाक्य रे टाइम मेंशन होई थाए तेबे ताहा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस बा धारावाहिक भविष्यत समय अटे। उदाहरण राम फुटबॉल खेलुथिबो, वाक्यर शेष रे उ थिबो अछि, तेनु एहा फ्यूचर कंटीन्यूअस अटे। किंतु जदि आमे एही वाक्य रे टाइम मेंशन करिबा, जेपरि कि राम 8टारु फुटबॉल खेलुथिबो एवं राम 2 घंटारु फुटबॉल खेलुथिबो, एही वाक्य गुडी करे टाइम बा समय सूचित होई अछि, तेनु एगुड़िक फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टाइम रो उदाहरण अटे। एबे आसंतु जानिबा अफर्मेटिव सेंटेंस बा सकारात्मक वाक्य विषय रे। एहार रोल टी हेउछि सब्जेक्ट प्लस शाल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। आमे आई एवं उई पाखरे शाल हैव बीन एवं अन्य समस्त सब्जेक्ट पाखरे विल हैव बीन लिखि थाउ, किंतु स्पोकन इंग्लिश रे आमे समस्त सब्जेक्ट पाखरे विल हैव बीन व्यवहार करि परिबा। सेही परि आमे पॉइंट ऑफ टाइम पूर्वरु सिंस एवं पीरियड ऑफ टाइम पूर्वरु फॉर व्यवहार करि थाउ। एबे आसंतु एही फॉर्मूला को व्यवहार करी आमे केते गुडी ओडिया वाक्य को इंग्रजी रे अनुवाद करिबा। मु जाई आसुथिबी, प्रथमे सब्जेक्ट मु पई आई लिखिबा, सब्जेक्ट परे शाल और विल, आई पाखरे शाल बसी थाए, शाल परे हैव, हैव परे बीन, आई शाल हैव बीन, तापरे V1 प्लस ing, जीवार इंग्राजी गो, गो प्लस ing गोइंग, आई शाल हैव बीन गोइंग, मु जाई आसुथिबी। परवर्ती वाक्य तुमे 8टारु खेली आसुथिबो, प्रथमे सब्जेक्ट तुमे पाई यू लिखिबा, यू पाखरे विल बसिबो, विल परे हैव, हैव परे बीन, यू विल हैव बीन, तापरे V1 प्लस ing, खेलिबार इंग्राजी प्ले, प्ले प्लस ing प्लेइंग, 8टारु 8टा एक पॉइंट ऑफ टाइम, तेनु ता पूर्वरु सिंस लिखिबा, सिंस 8 o'clock, you will have been playing since 8 o'clock, तुमे 8टारु खेली आसुथिबो, से 2 घंटारु खेली आसुथिबो। प्रथमे सब्जेक्ट से पाई आमे ही किंबा सी लिखि परिबा, सी पाखरे विल बसी थाए, विल परे हैव, हैव परे बीन, सी विल हैव बीन, खेलिबार इंग्राजी प्ले, प्ले प्लस ing प्लेइंग, 2 घंटा
यह एक पीरियड ऑफ टाइम तेणु ता पूर्वरु आमे फॉर लिखिबा फॉर 2 hours she will have been playing for 2 hours से 2 घंटारू खेली आसुथिबो। एबे आसंतु आमे नेगेटिव सेंटेंस बा नकारात्मक वाक्य विषय रे जानिबा। एहार रूल टी हेउची सब्जेक्ट प्लस शाल और विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। You will have been going तुमे जाई आसुथिबो। आमे एही वाक्यटी को नेगेटिव करिबा। आमे रूल अनुसारे शाल परे नॉट जोग करी वाक्यटी को लिखि देबा किंतु आमे बेले बेले एठारे भूल करी थाउ। आमे विल परे नॉट जोग न करी बेले बेले हैव परे किंबा बेले बेले बीन परे नॉट जोग करी थाउ किंतु एठारे मु आपण माननकु कहि रखिबी नॉट सबु बेले 3 नंबर स्थान रे आसी थाए। प्रथमे सब्जेक्ट सब्जेक्ट परे फास्ट हेल्पिंग वर्ब ता परे नॉट तेणु आमे विल परे नॉट जोग करी वाक्यटी को लिखिबा। यू विल नॉट हैव बीन गोइंग। विल नॉट रो शॉर्ट फॉर्म लिखिले यू वोंट हैव बीन गोइंग तुमे जाई आसु नथिबो। सेही परी he will have been playing since 8 o'clock से 8 टारू खेली आसुथिबो। आमे रूल अनुसारे will परे not जोग करी वाक्यटी को लिखिबा। he will not have been playing since 8 o'clock। will not रो शॉर्ट फॉर्म लिखिले he won't have been playing since 8 o'clock से 8 टारू खेली आसु नथिबो। परवर्ती वाक्य I shall have been learning English for 2 months मु 2 मासरु इंग्राजी शिखी आसुथिबी। आमे साल परे नॉट जोग करी वाक्यटी को लिखिबा। I shall not have been learning English for 2 months। shall not रो शॉर्ट फॉर्म लिखिले I shan't have been learning English for 2 months मु 2 मासरु इंग्राजी शिखी आसु नथिबी। नेगेटिव परे आमे इंटरगेटिव सेंटेंस बा प्रश्नवाचक वाक्य विषय रे जानिबा। एहार रूल टी हेउची शाल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। You will have been going तुमे जाई आसु थिबो। आमे एही वाक्यटी को इंटरगेटिव करिबा। रूल अनुसारे प्रथमे will लिखिबा तापरे वाक्यर बाकी अंशटी को लिखि देबा। Will you have been going तुमे जाई आसु थिबो कि? He will have been playing since 8 o'clock से 8 टारू खेली आसु थिबो। प्रथमे will लिखिबा तापरे वाक्यर बाकी अंशटी को लिखि देबा। Will he have been playing since 8 o'clock से 8 टारू खेली आसु थिबो कि? सही परी I shall have been learning English for 2 months मु 2 मासरु इंग्राजी शिखी आसु थिबी। एहा को इंटरगेटिव करिबा पई प्रथमे shall लिखिबा तापरे वाक्यर बाकी अंशटी को लिखि देबा। Shall I have been learning English for 2 months मु 2 मासरु इंग्राजी शिखी आसु थिबी कि? इंटरगेटिव सेंटेंस परे आमे नेगेटिव इंटरगेटिव बा नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य विषय रे जानिबा। एहार रूल गुडी कहला shall और will प्लस सब्जेक्ट प्लस not प्लस have
plus been plus V1 plus ing plus object plus since or for plus time এবং অন্যটি shan't or won't plus subject plus have plus been plus V1 plus ing plus object plus since or for plus time. You will not have been going এবং you won't have been going ତୁମେ ଯାଇ ଆସୁ ନଥିବ। ଆମେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇଣ୍ଟରଗେଟିଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ you will not have been going। ପ୍ରଥମ ରୁଲ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ will ଲେଖିବା, ତାପରେ ବାକ୍ୟର ବାକି ଅଂଶଟିକୁ ଲେଖିଦେବା। Will you not have been going? ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟ you won't have been going। ଦ୍ୱିତୀୟ ରୁଲ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ won't ଲେଖିବା, ତାପରେ ବାକ୍ୟର ବାକି ଅଂଶଟିକୁ ଲେଖିଦେବା। Won't you have been going? ତୁମେ ଯାଇ ଆସୁ ନଥିବ କି? ସେହିପରି he will not have been playing since 8 o'clock ଏବଂ he won't have been playing since 8 o'clock ସେ 8টাରୁ ଖେଳି ଆସୁ ନଥିବ। ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ he will not have been playing since 8 o'clock। ପ୍ରଥମ ରୁଲ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ will ଲେଖିବା, ତାପରେ ବାକ୍ୟର ବାକି ଅଂଶଟିକୁ ଲେଖିଦେବା। Will he not have been playing since 8 o'clock? ପରବର୍ତ୍ତୀ ବାକ୍ୟ he won't have been playing since 8 o'clock। ଦ୍ୱିତୀୟ ରୁଲ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ won't ଲେଖିବା, ତାପରେ ବାକ୍ୟର ବାକି ଅଂଶଟିକୁ ଲେଖିଦେବା। Won't he have been playing since 8 o'clock? ସେ 8টাରୁ ଖେଳି ଆସୁ ନଥିବ କି? ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ yes or no questions ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏହାର ରୁଲଟି ହେଉଛି shall or will plus subject plus have plus been plus V1 plus ing plus object plus since or for plus time. Will he have been studying for 3 hours? ସେ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ପଢ଼ି ଆସୁଥିବ କି? ଏହାର ଲଙ୍ଗ ଆନ୍ସରରେ କହିବା yes, he will have been studying for 3 hours କିମ୍ବା yes, he'll have been studying for 3 hours। ହଁ, ସେ 3 ଘଣ୍ଟାରୁ ପଢ଼ି ଆସୁଥିବ। ସର୍ଟ ଆନ୍ସରରେ କହିବା yes, he will have been or yes, he will have or yes, he will or yes। Will she have been crying? ସେ କାନ୍ଦି ଆସୁଥିବ କି? ଏହାର ଲଙ୍ଗ ଆନ୍ସରରେ କହିବା no, she will not have been crying or no, she'll not have been crying or no, she won't have been crying। ନା, ସେ କାନ୍ଦି ଆସୁ ନଥିବ। ସର୍ଟ ଆନ୍ସରରେ କହିବା no, she will not have been or no, she won't have or no, she won't or no। yes or no questions ପରେ ଆମେ WH questions ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। WH questions ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଆମେ WH ୱାର୍ଡର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇଥାଉ। ଏଠାରେ ମୁଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ WH ୱାର୍ଡର ଉଦାହରଣ ଦେଇଅଛି। ଏହି WH ୱାର୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆମେ WH questions ତିଆରି କରିବା। WH questions ତିଆରି କରିବାର ରୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା WH ୱାର୍ଡ plus shall or will plus subject plus have plus been plus V1 plus ing plus object plus since or for plus time ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି WH word plus shall or will plus subject plus not plus have
plus been plus V1 plus ing plus object plus since or for plus time. मु केउठारे काम करी आसुथिबी आमे एही वाक्यटी को इंग्राजी रे अनुवाद करिबा। प्रथमे WH वर्ड केउठारे रो इंग्राजी where, WH वर्ड परे shall और will एठारे सब्जेक्ट मु बा आई तेणु आई पाखरे shall लेखिबा। shall परे सब्जेक्ट मु पाई आई लेखिबा। सब्जेक्ट परे have, have परे been, been परे V1 plus ing काम करिबा work, work plus ing working। Where shall I have been working मु केउठारे काम करी आसुथिबी। सेही परी तुमे 8टारू कोन करी आसुथिबो। प्रथमे WH वर्ड कोन व्हाट, WH वर्ड परे shall और will एठारे सब्जेक्ट तुमे बा यू आमे यू पाखरे will लेखिबा। will परे सब्जेक्ट तुमे पाई यू लेखिबा। यू परे have, have परे been, been परे V1 plus ing करिबार इंग्राजी do, do plus ing doing। 8टारू 8टा एक पॉइंट ऑफ टाइम तेणु ता पूर्वरु since लेखिबा। 8टा 8 o'clock। What will you have been doing since 8 o'clock तुमे 8टारू कोन करी आसुथिबो। परवर्ती वाक्य से काहींकी 5 दिनरु स्कूल आसु नथिबो। एभरी नेगेटिव वाक्य गुडी को इंटरगेटिव करिवा समय रे आमे द्वितीय रूल टी व्यवहार करिथाउ। तेणु द्वितीय रूल अनुसार प्रथमे WH वर्ड काहींकी why, WH वर्ड परे shall और will एठारे सब्जेक्ट से he और she तेणु ता पाखरे will लेखिबा। ता परे सब्जेक्ट से पाई आमे he किंबा she लेखि परिबा। सब्जेक्ट परे not, not परे have, have परे been, been परे V1 plus ing आसीबा come, come plus ing coming। स्कूल को टू स्कूल 5 दिनरु 5 दिन एक पीरियड ऑफ टाइम तेणु ता पूर्वरु आमे फॉर लेखिबा। फॉर 5 days। Why will he not have been coming to school for 5 days से काहींकी 5 दिनरु स्कूल आसु नथिबो। एबे आसंतु आमे एही अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरगेटिव एवं नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस गुडी को प्रतिदिन अभ्यास करिबा पई एक टेबल साहाय्य रे लेखिबा। एठारे आमे गो वर्ब साहाय्य रे लेखिबा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर I shall have been going मु जाई आसुथिबी। एहारो नेगेटिव I shall not have been going और I shan't have been going मु जाई आसु नथिबी। इंटरगेटिव shall I have been going मु जाई आसुथिबी की। नेगेटिव इंटरगेटिव shall I not have been going और shan't I have been going मु जाई आसु नथिबी की। फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर we shall have been going आम्भे माने जाई आसुथिबु। नेगेटिव we shall not have been going और we shan't have been going आम्भे माने जाई आसु नथिबु। इंटरगेटिव shall we have been going आम्भे माने जाई आसुथिबु की। नेगेटिव इंटरगेटिव shall we not have been going और shan't we have been going आम्भे माने जाई आसु नथिबु की। फर्स्ट पर्सन परे आमे सेकेंड पर्सन साहाय्य रे लेखिबा। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर you will have been going to जाई आसुथिबु। you will not have been going और you won't have been going
तू जाई आसु नथिबु will you have been going तू जाई आसुथिबु कि will you not have been going or won't you have been going तू जाई आसु नथिबु कि सेकंड पर्सन प्लुराल नंबर you will have been going तुम्भे माने जाई आसुथिबो you will not have been going or you won't have been going तुम्भे माने जाई आसु नथिबो will you have been going तुम्भे माने जाई आसुथिबो कि will you not have been going or won't you have been going तुम्भे माने जाई आसु नथिबो कि सेकंड पर्सन परे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर he or she will have been going से जाई आसुथिबो he or she will not have been going or he or she won't have been going से जाई आसु नथिबो will he or she have been going से जाई आसुथिबो कि will he or she not have been going or won't he or she have been going से जाई आसु नथिबो कि थर्ड पर्सन प्लुराल नंबर they will have been going सेमाने जाई आसुथिबे they will not have been going or they won't have been going सेमाने जाई आसु नथिबे will they have been going सेमाने जाई आसुथिबे कि will they not have been going or won't they have been going सेमाने जाई आसु नथिबे कि एबे आसंतु आमे एही वाक्य गुडी को डू वर्ब साहाय्य रे लेखिबा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर I shall have been doing मु करी आसुथिबी नेगेटिव I shall not have been doing or I shan't have been doing मु करी आसु नथिबी इंटरगेटिव shall I have been doing मु करी आसुथिबी कि नेगेटिव इंटरगेटिव shall I not have been doing or shan't I have been doing मु करी आसु नथिबी कि फर्स्ट पर्सन प्लुराल नंबर we shall have been doing आम्भे माने करी आसुथिबु we shall not have been doing or we shan't have been doing आम्भे माने करी आसु नथिबु shall we have been doing आम्भे माने करी आसुथिबु कि shall we not have been doing or shan't we have been doing आम्भे माने करी आसु नथिबु कि फर्स्ट पर्सन परे सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर you will have been doing तू करी आसुथिबु you will not have been doing or you won't have been doing तू करी आसु नथिबु will you have been doing तू करी आसुथिबु कि will you not have been doing or won't you have been doing तू करी आसु नथिबु कि सेकंड पर्सन प्लुराल नंबर you will have been doing तुम्भे माने करी आसुथिबो you will not have been doing or you won't have been doing तुम्भे माने करी आसु नथिबो will you have been doing तुम्भे माने करी आसुथिबो कि will you not have been doing or won't you have been doing तुम्भे माने करी आसु नथिबो कि सेकंड पर्सन परे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर he or she will have been doing से करी आसुथिबो he or she will not have been doing or he or she won't have been doing से करी आसु नथिबो will he or she have been doing से करी आसुथिबो कि will he or she not have been doing or won't he or she have been doing से करी आसु नथिबो कि थर्ड पर्सन प्लुराल नंबर they will have been doing सेमाने करी आसुथिबे they will not have been doing or they won't have been doing सेमाने करी आसु नथिबे
will they have been doing ସେମାନେ କରି ଆସୁଥିବେ କି will they not have been doing or won't they have been doing ସେମାନେ କରି ଆସୁ ନଥିବେ କି ଏହିଭଳି ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭର୍ବ ସାହାଯ୍ୟରେ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस रो अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरगेटिव एवं नेगेटिव इंटरगेटिव सेंटेंस गुडी को लेखिबा अभ्यास कले अति सहजरे मने रखी परिबा आजि पई एतिकी जदि मोर एही भिडियोटी आपण माननकु भलो लागि थाए तेबे भिडियोटी को लाइक एवं शेयर करंतु एमिति नुआ नुआ भिडियो देखिबा पई मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु पुणी देखा हेबो परवर्ती भिडियो रे टिल देन टेक केयर बाय बाय रहुची नमस्कार।